The exogenic forces are also called the secondary forces. In secondary forces, the number of agents are active over the surface of the earth. So these agents are making landform through erosional work, through depositional work, or even through the transportational action. So among all, the wind is one of the very important agent in making of the secondary landforms. This wind action is also called the aeolian process. And wind has the ability to shape the surface of the earth. Wind may erode, transport, and deposit material. So this has material. This material actually have different type of shapes and sizes. So, but it controlled by the velocity of the wind. So यहाँ ये मैं कहता चलूँ कि जो विंड वेलोसिटी है या जिसे हम हवा की रफ्तार कहते हैं उस पे ट्रांसपोर्टेशनल वर्क विंड का डिपेंड करता है. अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह विंड ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकती है और उसकी एरोजनल वर्क बढ़ जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन वर्क तो उसका बढ़ेगा लेकिन एरोजनल वर्क भी बढ़ जाएगा. और सेम इज़ द केस विद द डेपोजिशन कि जब उसने वो मटेरियल कैरी किया हुआ है तो उसकी जब स्पीड कम होगी विंड की तो उसको वो किसी और जगह डिपॉजिट करेगी. सो थ्रू एरोजन एंड डेपोजिशनल वर्क ऑफ द विंड वी हैव नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स. Now, wind is an active agent in regions with sparse vegetation, यानी जहाँ पर vegetation कम है. और ये भी जहन में रखना चाहिए कि जहाँ vegetation कम होगी वो arid type of environment होगा या उसको हम semi-arid type of climate भी कह सकते हैं. Like we have a best example of Pakistan. So most of the Pakistan's areas are under semi-arid and arid type of climate. So इसको हम desert environment भी कहते हैं या सहराई माहौल भी कहा जाता है. सो इस तरह के एरियाज में विंड का एक्शन बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर कम है, वेजिटेशन कवर कम है. सो दैट्स व्हाई विंड हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ विंड एक्शन. दिस स्लाइड शोज दैट it has sparse vegetation and number of landforms are created due to the erosion and the depositional capability of the wind. Now here we have a slide which shows a massive dust storm. It evolved over Al Asad in Iraq on April 27, 2005. So the moving air has the power to carry huge volume of sediments. Loose grains can be picked up and transported by wind. Material that is carried by wind is in itself an effective agent of erosion, eroding rock into a variety of shapes. तो यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब हवा की स्पीड या वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी तो उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है मटेरियल की वो भी बढ़ जाएगी. और यहाँ ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि जितना मटेरियल का साइज बड़ा होगा वो अर्थ सरफेस के जो क्लोजर लेयर्स हैं वहाँ उसका एरोडेड मटेरियल मौजूद होगा. एज ए एरोडेड मटेरियल वो काम करेगी और जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपर लेयर में मूव करेंगे जिसमें सिल्ट पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट. नौ ये बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कहना. When wind has erosion, it has two type of actions. Number one is deflation and number two is abrasion. Deflation means the removal of loose, fine-grained particles by the turbulent action of the wind, whereas abrasion means the wearing down of the surface by grinding action. So deflation से हमें ये मुराद लेनी चाहिए जो फाइन पार्टिकल हैं वो जब हवा ज़मीन से सरफेस से उठाती है तो वहाँ पर उठाने के बाद जो फीचर बनते हैं उसको डिफ्लेशन फीचर्स कहते हैं. और अब्रेशन से मुराद ये है कि वही पार्टिकल जो हवा कैरी करती है वो एक वेपन का काम करते हैं और वो वेपन जो है किसी भी रॉक या सरफेस के ऊपर उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसको एरोड करते हैं तो उससे भी फीचर हमें नजर आते हैं. सो दिस स्लाइड शोज दैट द ग्राइंडिंग एरियाज अब्रेशन हुई है यहाँ पे और सरफेस पे मटेरियल जो है जो हार्ड रॉक हैं वो उस सूरत में मौजूद है.
Now this is again one of the feature of the abrasion, which is called the desert pavement. Most aeolian deflation zones are composed of desert pavement, are also called the rig. It is a desert surface covered with closely packed, interlocking, angular or rounded rock fragment of pebble size. It is a sheet-like surface of rock fragment that is remained after wind removal the fine particle. Almost half of the Earth's desert surface are stony deflation zones. So most of the desert environment is made by the process of desert pavement or by the process of the aeolian deflation. Now this feature shows that we have a hollow or depressions जिसे हम deflation depressions भी कहते हैं और ये भी हवा के मटेरियल को उठाने के बाद पैदा हुआ है and this is called the blowout. So blowout are the sandy depressions in a sand dunes ecosystem caused by the removal of the sediment by the wind. Blowout occur in partially vegetated dune fields or sand hill areas. Blowout forms when a pitch of protective vegetation is lost, allowing strong wind to blow out sand and form a depression. Sometimes this depression is 70 meters in depth. So this is one of the feature of the earth erosion, which is called the wind abrasion, is called the vent effects. And they are rocks that have been abraded or etched or grooved or polished by the wind-driven sand or fine particles. These geomorphic features are most typically found in arid environment where there is a little vegetation to interfere with aeolian particle transport along frequent strong winds. As in this slide shows, impressive carved mushrooms are centerpiece of White Desert National Park, Egypt. This slide shows that the feature belongs to the wind abrasion. This feature is called the yarding, is a feature formed by the dual action of wind abrasion by dust and sand and deflation, which is the removal of the loose material. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हार्ड रॉक जो है वो उसी तरह मौजूद है बट उसके जो सॉफ्टर मटेरियल था वो अर्थ उसको एरोड करती हुई निकल गई आगे निकल गई सो इट मींस द सॉफ्टर मटेरियल विल एरोडेड बाय द विंड एक्शन but the harder one stands still. The soft material is eroded and removed by the wind and the harder material remained. The yardings are well-shaped desert ridges. By removing loose material, the wind exposed rock to further weathering and action with the result that the land surface are actively transported or transformed by the wind deflation and abrasion processes. Now, particles which are transported by the wind through suspension, saltation or bouncing and creeping along the ground, small particle may be held in the atmosphere in suspension. So, यहाँ ये बात ज़हन में रखनी बहुत ज़रूरी है जब हम ये देखते हैं कि अर्थ पे विंड एक्शन जारी है तो विंड एक्शन में स्पीड जब वेलोसिटी ऑफ द विंड जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय द विंड वेलोसिटी जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसको कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो अपर लेयर्स में फाइनस पार्टिकल मूव करेगा बट जो थिकर मटेरियल है वो लेयर जो अर्थ के करीब है वहाँ पर उसकी मूवमेंट होगी और वहाँ इरोजन भी ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा